So you are not so smart. I'm not saying this to you. That's the name of the book. So आज जब मैं फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे भेज रहा था आज के सेशन के बारे में, so I just message them कि you are not so smart. And I started getting all the frowning emojis. फिर मैंने बोला भाई ये किताब का नाम है. I know some of them are here. The victims are here and smiling at me. Madhura is smiling at me. Okay. I know the very discouraging name and completely understand, but this will really हमारे पैर जमीन पर आ जाएंगे. मैं तो आ गया. इतने थप्पड़ खाए मैंने ये बुक पढ़ने के बाद, और जो जो भी हवा थी दिमाग में वो सब उतर गई. First idea that our brain is not made to hold back ideas or hold back the data. या मतलब आइडिया, मतलब मैं बिजनेस आइडिया की बात नहीं कर रहा हूँ. एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और टू डू लिस्ट, आज के काम करने हैं, it is there is no innate intelligence in our brain to hold back things, to hold back ideas, to store it. Memory hai, I understand, but that is secondary. Our brain is primarily made to create ideas and not to hold back. और इसलिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि अरे वो दूध लाना था और मैं उस शॉप से गुजरा या गुजरी और वापस किसी काम के लिए और वापस घर पे आ गए और भूल गया, अरे यार वो दूध लाना था, याद कैसे नहीं आया, हाउ स्टूपिड आई एम. ऐसा हुआ है? एवरीबॉडी इज नॉडिंग. सो डोंट थिंक दैट यू आर स्टूपिड, बिकॉज देयर इज नो सच. ऐसा है ही नहीं कुछ हमारे दिमाग में जो उस दुकान से हम गुजरेंगे और एक पॉपअप आएगा हमारे दिमाग में कि अरे और रिमाइंड करेगा दूध लेना है. ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है हमारे. इतना इतना तेज दिमाग नहीं है हमारा. ओके, एंड और सब लोग आते हैं इसमें, देयर इज नो एक्सेप्शन. सो उसके लिए वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सिस्टम्स. या अभी लोकेशन का मुझे पता नहीं, कुछ ऐप होता है लोकेशन बेस्ड रिमाइंडर, बट टाइम बेस्ड रिमाइंडर्स तो होते हैं ना, राइट. सो आवर ब्रेन इज मोटा मोटी अभी मैं डोंट लुक एट द क्लॉक. ओके, अगर मैं पूछूंगा कि अभी अभी कितना बजा, अभी we all know that the session started at 7 o'clock, but at any given point of time somebody asked you what's the time without looking at the watch or clock, will you be able to tell precisely कितने बजे है कि हाँ भाई 1:25 बजे है? No, but you can tell that it is afternoon, right, by looking at the surroundings, right. So our brain is made to distinguish between morning, afternoon, evening and night, but it with fair amount of approximation, whereas minute clock हमारे दिमाग में है नहीं, right. So अगर कुछ time based काम है तो हमको we have to take help of our system. For example, alarm. जैसे I'm going through Ayurvedic treatment and my doctor few days ago gave me a time based prescription for taking medicines, which was 10 a.m. and 6 a.m. Now no, by default we are so overconfident, हाँ याद आ जाएगा 10 बजे. Especially if you are not used to it for last 20 years to take something at 10 o'clock exactly, तो कैसे याद आएगा, right. So you have to take help of some external device or system which like an alarm. पर फिर वो अलार्म लगाते तो मेरे बहुत सारे अलार्म्स है, ये मोटर ऑन करना, कचरा डालना, तो मेरी कचरे की गाड़ी 9 बजे आती है और मैं हमेशा भूल जाता हूँ, तो वो अलार्म बजता है. फिर मेडिसिन का अलार्म. मेरे दोस्त हंसते थे मेरे पे कि क्या तेरे सब अलार्म लगता है. और फिर रात को ना सोक नट्स, रात को नट्स सोक करता हूँ, बादाम और ये सब, तो दोस्त हंसते थे मेरे पे. बट दिस इज व्हाट डोंट फील दैट आप में कुछ कमियां हैं. ऑलराइट, यू बिंदास रहो क्योंकि हम सब सेम है एट द सरफेस लेवल, वी ऑल आर सेम. एंड सो having said that uh, that our brain is not made for storage primarily, so there is nothing called poor memory and bad memory. Okay, at the same time there is something called trained memory and untrained memory. Yes, there is a very rare, लाख में से एक ऐसा होता है, मराठी में हम उसको बोलते हैं एक पार्टी. मतलब एक बार कुछ सुना या पढ़ा तो याद रह जाता है. दे आर गिफ्टेड. स्वामी विवेकानंद आई थिंक वाज ऐसा एक पार्टी बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फोटोग्राफिक मेमोरी, जो 99% लोगों में होती नहीं, मेरे में भी नहीं है. सो रिपीटेशन इज द फ्रेंड ऑफ मेमोरी. अगर आपको आपके मेमोरी को तेज करना है तो रिपीटेशन. नाउ फॉर एग्जांपल श्रेया, इफ यू आर देयर, what are the chances, Shreya, that you will forget your own name in your lifetime? Almost zero. Yeah,
unsurprisingly, that's the only word you have repeated maximum number of times in your life till now, and hence you'll never forget. Got it? Repetition is the friend of memory. So jitna repeat karoge, that's why we do revision 1, revision 2, revision 3 for exams. Now what I'm going to tell this especially for students. So if you have kids around you, you can ask them to join you if you're in your house. सो यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर कुछ पढ़ाई के दौरान वो किताब खोलेंगे, आइदर टेक्स्ट बुक और नोटबुक, फिर वो क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर वो जो 8 पॉइंट्स है आंसर पे वो पढ़ेंगे, राइट? एंड देन कम्स द टाइम फॉर फर्स्ट रिवीजन, किताब खोलेंगे फिर 8 पॉइंट्स पढ़ेंगे, सेकंड रिवीजन किताब पढ़ेंगे और 8 पॉइंट्स पढ़ेंगे, राइट? नाउ द प्रॉब्लम इज वी फेल टू अंडरस्टैंड दैट मेमोरी हैज गॉट टू पार्ट्स और टू डिपार्टमेंट्स. One is storage and one is recall. We oftentimes forget that there is another part called recall. Okay, और हम सिर्फ storage पे ही focus करते हैं. So what we are doing is we are opening and try to store that piece of knowledge in our memory. जैसे हम कंप्यूटर में फाइल सेव करते हैं ना, फोल्डर का नाम तो सी ड्राइव स्लैश फोल्डर का नाम स्लैश फाइल का नाम, तो वैसे कहीं ना कहीं वो स्टोर हो गया. Whatever technique you use, I'm not going to discuss that technique right now of storage, because I want to discuss on recall, which is ignored most of the time. Now tell me, are you going to have a book during the exam, except in an open book system? No, right? And what you are doing is, while revision you are using a book, and no, you are focusing on storage, whereas what is required in the examination hall is recall. So you are not simulating the scenario that's going to happen in the examination hall. कितने लोग ऐसे हैं, बच्चे और बुजुर्ग, कि दो तीन बार रिवाइज किया, वो याद था आंसर, और एन मौके पे एग्जाम के दौरान याद नहीं आया. सबने हाथ ऊपर किया. अरे बाप रे. कुछ लोग नहीं करे क्योंकि उनके बच्चे आजू बाजू पे, तो भांडा नहीं फूटना चाहिए ना बच्चों के सामने. होता है अय्यर जी. या नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपेंस, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन स्टोरेज, राइट? जैसे मराठी में हम उसको बोलते हैं रंगीत तालीम. हम रंगीत तालीम नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और ही कर रहे हैं. सो एग्जैक्टली जो होने वाला है एग्जाम में वो हमको करना है. यू कीप द बुक अवे. Okay, for the first time, of course, you have to take the book, read the question and those 8 points, and then keep the book away and try to recollect those 8 points which are a part of the answer. शायद 8 में से सिर्फ 6 याद आएंगे, ठीक है? Then go check the book, check out those 2 points that you have missed out. Again, keep the book away and try to recollect those 8 points. Now you are practicing to pressurize that part of the brain which is going to be pressurized in the examination hall. समझा? Now you're actually simulating the examination scenario. Got it? Now it's not net practice, it is actually match. तो अगर एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा दिमाग पे वो पार्ट ऑफ ब्रेन आपको जोर लगाओगे, डेफिनेटली आपको एग्जाम में टेंशन ही नहीं आएगा, नर्वसनेस ही नहीं आएगा, बिकॉज आपने वो खुद किया है ऑलरेडी. या राइटिंग डाउन हेल्प्स, बट राइटिंग डाउन टेक्स लॉट ऑफ टाइम, राइट? सो आप सिर्फ just close your eyes and try to recollect those 8 points. So please tell this to your kids कि ये करना है. तो जब ये टेक्निक मैंने एक किताब में पढ़ा था, ये टेक्निक which got reiterated in this book. तो बच्चों ने जब पढ़ता था, मैंने बहुत पहले ये बुक पढ़ी थी हैरी लॉरेन की, हाउ टू डेवलप सुपर पावर मेमोरी, और मैं ऐसे आंखें बंद करके वो आंसर रिवाइज करता था. तो मेरी माँ मेरे को डांटती थी, ये तो क्या कर रहे हो, पढ़ाई करो ना. तो माँ को बोलता था, माँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. पढ़ाई करने के लिए किताब होनी जरूरी नहीं है, एक बार पढ़ने के बाद उसको बाजू पे हटा के हमको रिवीजन करना है, ठीक है? तो लेकिन नेक्स्ट टाइम आप ऐसा मत बोलो माँ को, शेंडी मत लगाओ. मतलब फर्स्ट टाइम तो बुक लेना है, बाद में बुक नहीं लेना, नहीं तो आप मेरे नाम पे बिल फाड़ोगे कि अमृत ने बोला बुक नहीं लेना पढ़ाई के टाइम. ऐसा नहीं है. So this is what, I hope you understand the importance of recall. Yeah, storage is important, but recall is equally important. Well, so as I said, we have to take help of external devices to write down your to-do list. Okay, don't try to remember them. Don't trust your memory. Okay, अब कितना भी आपको लगता है, we are very overconfident, कि ये तो याद आएगा ही, पर कितनी बार we act stupidly, होता है, पर we don't admit, हमारा ईगो बीच में आता है.
and then we try to justify that mistake. अरे नहीं वो क्या हुआ, वो थोड़ा मैं थोड़ा काम में बिजी था तो रह गया मेरे से, right? Yeah. So and don't try to bifurcate your to do list कि ऑफिस का to do list है और ये घर का to do list, सब एक ही पेज पे डालोगे तो भी चलेगा. इनफैक्ट वैसा ही करना है. Our brain doesn't like those departments and departmentalization of things. There is one brain, all right? In fact, if you see the physical structure of the brain, it's all, everything is like interconnected to everything, right? There are no proper cubicles or departments in our brain, whereas we like to departmentalize everything, right? So for example, my today's to-do list is to buy say coffee, and then I have to arrange my friend's daughter's birthday, वो plan है, and then पैंट भी ऑर्डर करना है, तो and then आज का टॉपिक का थोड़ा तैयारी करना था. So everything was dumped on the same page. All right, don't try to bifurcate. So as I said, there are no pop-up reminders when you cross the shop. This is point number one. Set alarms. Okay, there is no time-based mechanism in our brain कि वो pop-up आ जाएगा उस दौरान. Yeah, very interesting theory, not a theory but a philosophy or a concept, is that we take decisions emotionally most of the time and then try to justify them logically. I repeat, we take decisions emotionally and then try to find reasons to make it look logical, because we love to look logical. Say for example, नो ऐसा बोलते हैं ना कि अरे वो कुछ डार्क ऑलिव ग्रीन की ड्रेस ले ली, हाँ मेरी फ्रेंड ने, तो अरे अमृत हाँ मेरे पास वो कलर की ड्रेस थी नहीं इसलिए मैंने ली, ये बाकी सब है वो ही रह गई थी. बट एक्चुअली if deep down, if she asked herself, she fell for to the marketing gimmick, या वो जो बस वो it was an emotional decision or a very spontaneous decision. अगर जेब में पैसे भी थे पर वो एडमिट करना अच्छा नहीं लगता है ना, तो कुछ अच्छे अच्छे रीजन देंगे हम. या सो वी लाइक टू फाइंड पैटर्न्स इन कियोस. कुछ भी डिसऑर्डर रहेगा ना उसमें हम पैटर्न्स ढूंढना शुरू करते हैं. वो क्यों है? बिकॉज हमारा एवोल्यूशन ऐसे हुआ है. See, there are different theories of human evolution. What I got believed about was Yuval Noah Harari's *Sapiens* book पढ़ के कि if there was 2 lakh years of human evolution, तो उसमें से 1,80,000 साल we were nomadics. We used to एक जगह पर करके उस वहां का सब खाना खत्म हो गया तो change the place and go for to hunt new fruits, new animals. फिर वहां खत्म हो गया, change the place. 1,80,000 years. देन उसके बाद खेती का आविष्कार हुआ, एंड देन द रिमेनिंग 20,000 years. Now tell me, what is more dominant, 1,20,000 years or 20,000 years? 1,80,000 years or 20,000 years? That means we are still, ठीक है हमारी दुम चली गई, बहुत कुछ चेंजेस आ गए, but we are still biologically we possess those nomadic era instincts, right? For example, it is very easy to get distracted, but we need lot of effort to focus. You know why? Because for survival, distraction was important. If I'm focusing on very important thing when I was in the jungle, in the stone age, और पीछे शेर खड़ा है तो मैं मर जाता ना. So getting distracted at the tiniest noise or anything was important for our survival. वही आज हो रहा है देखो, वरना फोकस शुड हैव कम टू अस नेचुरली ना. जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ, वहां से कोई गुजरा which has nothing to do with my work, I know it is useless, still मैं वहां पे देखूंगा अरे कौन गया या कौन गई, राइट? सो वैसे ही ये पैटर्न्स देखना एवोल्यूशन में बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जब हम घूमते थे एक जगह पे दूसरे जगह, तो वापस लौट के आना था घर पे, तो ये पेड़ ऐसा है, ऐसा इस पेड़ के बाद वो जरा डार्क कलर का पेड़ है, पैटर्न ढूंढ के हमको रास्ता बनाते थे. या अभी तारे, the stars are scattered randomly in the sky, still we find to start to find pattern कि ये हिरन जैसा दिख रहा है, ये मेरी दादी की माँ का या दादी माँ का फेस लग रहा है, वो वहीं पे बैठी है. These are all actually we just force logic into this randomness, right? So now so this is what we always try to find patterns in chaos and disorder.
Now, if you agree that we still possess those nomadic eras instincts, that's why most of the people love traveling. If you were settled, so you should have hated traveling na, in long distance places. कि बहुत ज्यादा लोगों को traveling पसंद है, क्यों? Because we are still not accustomed to being in one place. We love to explore new places, new cultures, new people, right? So see, अभी भी हमें वो qualities है. We still have that monkey mind, getting distracted easily, finding patterns, traveling. तो ये सब प्रूव करता है कि अभी तक वी आर नॉट, नहीं तो अगर हम इतने इवॉल्व होते तो जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है वो नहीं होने चाहिए. Are you getting my point? You should have easily got accustomed to this lifestyle of sitting, putting your butt on the sofa and chair and spend 8 hours on the screen. इससे वो arthritis or diabetes or heart disease नहीं होने चाहिए. That means we still belong to that era, yeah, biologically or physiologically. सेकेंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज आई फाउंड दैट आइडिया ऑड मैन आउट, बट मुझे थोड़ा वो विषय से थोड़ा हटके लगा, बट सरप्राइजिंग द ऑथर हैज इंक्लूडेड दिस अबाउट कि स्मार्टनेस के नाम पे एक्चुअली पावर, we get confused between smartness and power, especially in men. Don't take it as a sexist comment, but evolutionarily women were more known for their beauty and men for their power. आज की तारीख में नहीं बोल रहा हूँ, it can overlap, yeah. Women can also show power. So I like this idea very much from the author, David McRaney, that now today, how if display of power still exists in us, okay, then how to display it in a relationship. A very deep thought that so most of the men indulge into physical abuse, gali galoj, to show power on his partner, but of course that's not a good practice. So but agar display of power is going to satisfy his instincts, then what are the new ways to display power, right? Money. But then again, that is not a healthy way to display power, because if you compete with your partner when it comes to money, that's again an unhealthy competition. So that made me think, if it then the power कैसे display करें, then a very good example here is that intellectual power, yeah, or physical power मतलब हाथ उठाना नहीं, exercising, there you can show a lot of power. See, in those days it was easy for the man to display power because he used to go and hunt and bring a prey, and that was his victory. And और उसकी वाइफ और बच्चे बोलते पापा आ गए, नाचने लगे, आज बड़ा शिकार लेके आए पापा, एंड दैट इज टू सेटिस्फाई हिज ईगो. आज वो कोई हिरन नहीं लेके आ रहा है, राइट? वो जैसा पैसा लेके आ रहा है, पैसा लेके आ रहा है, तो अरे मैं तेरे से पैसा ज्यादा कमाती हूँ, वो बोलती है, तो वो there is again this destruction of his power. So I think then working on your physique or working on your fitness can be one safe and very elegant way of displaying power to your partner. And और हम उसमें we try to disguise it with smartness, ऐसा author ने बोला. So actually वो smartness नहीं है, it's more of power than smartness. A very interesting experiment was mentioned in this book कि हम जितना खुद को स्मार्ट समझते हैं ना, या है, उससे ज्यादा समझते हैं. If we are like say 50 points smart, then we think that we are 70 points smart. और ये सबके साथ होता है. Yeah, whereas the other person knows the reality. Alright, the other person knows how stupid or how smart I am, but I don't know. We always overestimate our smartness. Yeah. So that was proved by a very interesting example in a classroom. In a university classroom, there were 50 students, and all of them were asked, how do you rate yourself? Below average student, average student, or above average student? The result was so funny. 88% of the students said, I'm above average. Do you get how funny the result is? अगर 88% above average है, तो average ही change हो गया ना? You know what is average, right? The mean point. If you know statistics, the normal distribution curve रहता है, वो हमेशा ऐसा होता है, where most of the data falls there, तो वो ऐसा curve आता है, bell curve आता है, right? और जो exception से वो long tail आता है उसमें, right? तो अगर
88% अगर above average है तो the curve will shift ना, it will get skewed to one to the either side. Yeah, so that proves that we all think above average. जो औकात है हमारी उससे ज्यादा ही हम खुद को समझते हैं. Now, how does this serve us? I don't know. This is just a piece of information. How to implement? कि बस पैर जमीन पे रखना है और कुछ नहीं. Yeah, I spoke about patterns ना, तो उसमें एक एग्जांपल रह गया मेरे से which I missed out because मुझे खुद का हैंडराइटिंग समझ में नहीं आया. Um, so we have a family friend, okay, happily married couple and 2 kids, one boy, one girl, grown up now. And बचपन से वो हमारा ताल्लुकात है हमारे. और बहुत सारे जब घर पे लोग आते हैं उनके, हम दिवाली या गणपति में उनके पास जाते हैं, मैं और मेरी बहन. तो बेटी को बोलते, बेटी तुम माँ के ऊपर गए हो, और बेटे को बोलते तुम बाप के ऊपर गए हो, सब ऐसे बोलते थे. और हम ना ऐसे मुंह छुपा के हंसते थे सब लोग, बिकॉज nobody knows that the sister, the daughter is the biological child, and the son was actually an adopted child. To see how much we try to find patterns. अभी कुछ लेना देना ही नहीं था, but of course I know it's not a point of joke, but it was important to prove that हम कितना खुद को शाणे समझते हैं, and we find patterns somehow in nonsense chaos. Yeah, about the premium brands and how वो हमको कैसे उल्लू बनाते हैं, उसका एक बहुत ही अच्छा मिसाल किताब में लिखा है. दो भाई रहते हैं, टेलर, और दुकान रहता है उनका, और एक भाई काउंटर पे बैठा रहता है, दूसरा भाई अंदर टेलरिंग या सिलाई करता रहता है अंदर के रूम में. तो एक कस्टमर आता है और बोलता है कि मुझे एक अच्छा सा सूट दिखाओ, ब्लेजर दिखाओ. तो वो जो काउंटर पे जो भाई है, वन ऑफ द ब्रदर्स, ही सेज दैट सॉरी, मुझे ऊंचा सुनाई देता है, जरा जरा जोर से बोलो. तो कस्टमर बोलता है, मुझे एक सूट चाहिए, थोड़ा ब्राउन कलर का अच्छा सा. तो बोलता है, अच्छा सूट चाहिए क्या, ठीक है. तो 2-3 सूट दिखाता है वगैरह. तो कस्टमर चूजेस कि ये वाला सूट अच्छा है, ये कितने का है. तो वो भाई बोलता है कि मुझे पता नहीं, मैं यूजुअली यहाँ पे नहीं रहता हूँ, मैं अंदर रहता हूँ, तो मेरे भाई को पूछता हूँ मैं. तो वो भाई को चिल्ला के बोलता है कि वो वाला सूट कितने को है, ब्राउन वाला. तो अंदर से वो बोलता है कि 1500. तो ये तो ऊंचा सुनता है, तो सुना है कितना, 500. तो अंदर से आवाज है, नहीं नहीं 1500. अच्छा 500, 500, ओके ओके ठीक है. तो ये सब बातें तो कस्टमर सुन रहा है, और कस्टमर को तो ये समझ में आता है कि अरे ये तो पागल है, तो 1500 बोल रहा है, इसको 500 सुनाई दे रहा है. तो फटाफट 500 रुपए देके वो सूट लेके भाग जाता है, और तो उसको लगता है कि चलो, तो अपनी तो निकल पड़ी, 1500 की चीज हमको 500 मिल गई. एंड देन इट वाज एक्चुअली कूप, प्लान ऑफ बोथ द ब्रदर्स. वो कुछ बहरा वगैरह होता नहीं है, और वो एक्चुअली वो बहुत महंगी रहती है, और वो 1500, मतलब इट वॉज जस्ट अ गिमिक टू ट्रिक, एक्सपेंसिव इज गुड, राइट. और वो एक्चुअली ब्लेजर वॉज ओनली फॉर 100 रुपीज, और वो 500 देके गया. सो द एक्सपेंसिव इज गुड, ये जो हमारे दिमाग में डाला है पूरी मार्केटिंग की इंडस्ट्री ने, इज पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म. I don't say that these big brands like Gucci and Zara are no better than the budget brands. उसमें of course कुछ तो होगा अच्छा, but then the quality is not in directly proportion to the price. Okay, it's way beyond it. But yeah, some people love to do that, but that's what the expensive is good वाला जो bias है वो हमेशा होता है लोगों में. Another bias is confirmation bias. This is quite serious. I want you to थोड़ा गौर से सुनो. We tend to read or listen to only those things which go to confirm our existing biases, existing beliefs. Got it? If I'm a Modi fan, I'll spend time with people who like Modi. I'll read things which is in favor of Modi. I will avoid the anti-Modi stuff. Got it? Because I don't want something that challenges my existing beliefs. If I believe in animal protein, then I'll avoid videos and books which advocate plant protein is better than animal protein. And especially this, I want to emphasize on this concept of confirmation bias because it's getting reinforced by the algorithms of YouTubes and Facebooks and Instagrams. I'll give you a very good example.
Now suppose there are two friends, two guys. One is a die-hard Modi fan, and other is a anti-Modi fan. Okay, anti-Modi guy. Now YouTube knows it very well that this guy called A loves Modi because he watches all videos which are in favor of Modi, right? Abki baar 400 par and वगैरह वगैरह. Now because YouTube knows it very well, तो वो वही videos उसको देगा, right? That is how there are customized algorithms, right? Now what happens is that guy thinks that the whole world loves Modi because उसको वो videos पे लाखों और करोड़ों views दिखते हैं ना एक एक वीडियो पे, तो उसको लगता है कि सब लोग are Modi fans, right? Where the same thing is happening with the other guy. He has watched he has liked few posts of Modi against Modi, या anti Modi, तो उसको वो सब आएगा, तो उसका एक खुद की दुनिया होगी, उसकी YouTube की दुनिया अलग है, और उसको लगता है यही पूरी दुनिया है. They're all Modi haters. This is I think dangerous, right? Because ये दोनों अगर मिलेंगे तो झगड़ा ही होने वाला है. अगर ये दोनों दोस्त है तो वो दोस्त रहेंगे नहीं, क्योंकि उसकी दुनिया, उसको लगता है ये मेरी दुनिया है जहाँ पे बस मोदी मोदी है, इसको लगता है ये मेरी दुनिया जिसमें बस मोदी जैसे बुरा इंसान कोई है नहीं. सो आई थिंक यहाँ पे हमको क्या करना है, दैट व्हाट आई डू इज if I meet an anti-Modi friend, it is an opportunity for me to listen to him and look at Modi from his perspective without agreeing with him, right? What's harm in it? झगड़ा करके मोदी को क्या फर्क पड़ने वाला है, वो तो वहां पे बैठा है, उसका काम कर रहा है, right? I see all these things happening around us. Yeah. So let's not get into this. उसपे कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं. हाँ, वो दोस्त चला जाएगा, उससे अच्छा है कि जस्ट से हाँ ओके आई अंडरस्टैंड. अगर मैं इफ आई हैड बीन इन योर शूज प्रॉब्लम में ऐसा सोचता. या दैट्स ऑल. सो हैविंग सेड दैट अबाउट स्मार्टनेस, और जब पता चला कि अच्छा हम इतने स्मार्ट है नहीं, तो फिर स्मार्टनेस पे काम क्यों करना चाहिए. So when we started, I and Farid started on this mission Make India Read. Farid is my friend, partner. We both work on Booklet, mission Make India Read. So if everybody is working on getting smarter day by day, तो हमको लगा कि then we'll be lost in the competition, क्योंकि हमको पता है हम इतने smart है नहीं भाई. ठीक है. Then we might as well work on kindness. So we started working on how we can be kinder day by day and let others work on how to be smarter day by day, and that really worked for us. Trust me, in last 8 years एक भी ऐसा किसी के साथ झगड़ा, ट्रोलिंग तो दूर की बात, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हमारे साथ. So the pillars on the foundational pillars on which the entire mission Make India Read or Booklet stands are three values which we constantly talk with each other and try to make it as part of our integral routine, integral behavior, is kindness, generosity, second thing, which is again in rare supply. Yeah. So kindness, generosity, and discipline. You all know that not a single Wednesday has gone without a booklet, or consistently we meet every last Thursday of the month to talk about, unless I'm extremely unwell, I'm hospitalized, तो शायद ऐसा नहीं होगा. सो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ बाहर बहुत सारा कंपटीशन इसमें है ना, तो फॉरगेट अबाउट दैट एंड डू समथिंग एल्स एंड क्रिएट योर ओन नीश rather than competing on the same level with others, right? जैसे हमने किया. So we don't, honestly हमको नहीं लगता हम इतने स्मार्ट लोग हैं, but yeah, we are trying to become kinder day by day. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अभी तक प्यूमा, जैगुआर, चीता, लेपर्ड ये सब एक ही लगते हैं. मुझे अभी तक समझ में नहीं आया उसके दोनों में फर्क क्या है इतना. That stupid I am. बाकी के छोटे छोटे चीजें आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में बोला इसमें. द ऑथर इज अगेंस्ट एस्ट्रोलॉजी. अभी यहाँ पे मैं एस्ट्रोलॉजी अच्छा है बुरा है मुझे नहीं बोलना है. जस्ट एक्सपेरिमेंट किया था मैंने, एक एक्सपेरिमेंट किया था बाय द वे कॉलेज में. सो मैंने क्या किया था, एक जो न्यूज़पेपर में जो आता है ना, हमारा मेरे माँ का फेवरेट न्यूज़पेपर था लोकसत्ता. उस पर कॉलम था आज का भविष्य, और क्या बोलते थे, जोडियक साइन को क्या बोलते हैं, रास रास बोलते हैं मराठी में, हिंदी में क्या बोलते हैं, राशि. तो सिंह होता है, मेष होता है, अलग अलग जोडियक साइंस होते हैं.
तो मैंने क्या किया, उसको एडिट किया और सिंह का कंटेंट इसमें डाला, मेष में डाला, मेष का कंटेंट कर्क में डाला, और सब पूरा शफल कर दिया, और 50 दोस्तों को मैंने वो दिया प्रिंट आउट। उन दोनों में ये नहीं था, व्हाट्सएप वगैरह था नहीं, और ये बहुत बहुत साल पहले वाली बात है। नॉट अ सिंगल पर्सन सेड दैट आई कुड नॉट रिलेट विथ इट, ये तो कुछ और ही है, ये मैं ऐसा हूं नहीं। कैन यू बिलीव? Now, those who believe in astrology, please take it in the right spirit. मुझे आपको ऑफेंड नहीं करना है, but this was the experiment I did, और उसके रिजल्ट्स ये थे। So what I'm saying is, अपना जो वीकनेस है ना, फाइंडिंग पैटर्न्स, फाइंडिंग लॉजिक, कि अगर उसमें बोला है कि तुम्हारे सबसे करीबी लोग तुमको हर्ट करते हैं ना, अरे तो दुनिया भर में होता है, किसके साथ नहीं हुआ है, राइट? तो अरे हाँ, कितना सही बोला इसने, ये तो बहुत ही अच्छा है रे, तो बताओ तो मुझे आगे क्या होने वाला है मेरे भविष्य में, राइट? या फिर योर फेवरेट फ्रूट इज मैंगो, एम आई राइट? 90% पीपल लव मैंगो यार, राइट? या फिर या दिस इज वेरी वेरी ना कि नो तुम किसी को अच्छा अच्छा करने जाते हो, और दूसरा सामने वाला कुछ और ही समझता है, और वो दैट पर्सन गेट्स हर्ट, और तुम्हारा ऐसा इंटेंशन कभी होता ही नहीं। यू नो, दे यूज सच लैंग्वेज कि इट इज एक्चुअली एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी, बट बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, यू रिलेट इट विद इट, हाँ ये मेरे लिए ही है। सी आई थिंक एस्ट्रोलॉजी शुड बी यूज्ड जहाँ पे कोई इंसान पूरा डिप्रेस हो गया है, और वो खुद को मारने जाने वाला है, खुदकुशी करने वाला जाने वाला है, और कोई कोई ज्योतिष बोलता है कि अरे नहीं, एक साल रुक, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, एंड ही चेंजेस हिज माइंड टू कमिट सुसाइड। नाउ दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, राइट? दैट्स रियली अ गुड थिंग, राइट? बट ये कोई ना, तुमको बच्चा नहीं होगा, या और ये सब गुण मैच हो गए, और बाद में पता चला 3 साल के बाद डिवोर्स हो गया। सो ये सब लिखा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑथर बोल रहा है। ओके, या आई थिंक दीज आर द पॉइंट्स आई हैव कवर्ड। या सो बहुत लोगों को लगता है ना कि अरे इसमें बहुत प्रॉफिट मार्जिन है, तो ये धंधा शुरू करते हैं, राइट? बट having a 300% profit margin doesn't mean you're going to grow in business, because there is another aspect, very important aspect, called scalability. If the business is not scalable, तो फिर एक सीमित पे रहेगा ना, आपका एक दायरा आ जाएगा बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, यू नो, रिक्शा वाला, एन एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज कितना है रिक्शा वाले का? 300%। उसका पेट्रोल का और अगर खर्चा निकालोगे ना, तो ही मेक्स 300% प्रॉफिट on the on the expenses that he makes. So does it mean that he will be Jeff Bezos one day? नहीं, why? Can anybody tell me why? You can unmute yourself and tell me. If ये सर्विस पे 300% मार्जिन है, तो क्यों नहीं वो कल अंबानी बनेगा? 24 घंटा मेहनत करेगा तो भी। You can write it down, yeah. Time limitation, yeah, you have answered partially right. Low value, okay. हरीश कुमार ने बोला है लो वैल्यू माइंडसेट, ओके, करो। नो स्केल, या नो स्केलेबिलिटी। प्रमोद, ये रिक्शा वाला कभी न्यूयॉर्क जाएगा क्या रिक्शा लेके? या बिल गेट्स उसको फोन करके बोलेगा कि मेरे को मैरीलैंड छोड़ के आ? नहीं, राइट? सो वो बस अपने जो एरिया है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जितना भी है, वो दायरे में ही वो चला सकता है, राइट? और 24 घंटा के ऊपर नहीं चला सकता। तो ज्यादा से ज्यादा कितना करेगा? 10 ट्रिप्स, 20 ट्रिप्स। ना, इट्स नॉट स्केलेबल, राइट? बट if he quits driving auto rickshaw and buys a fleet of auto rickshaws of 10 and puts them on and no let them others use it and then charge them, and ye sab now it's a completely different business, right? It's a rental business now, renting out the auto rickshaws, right? Usko usme auto rickshaw chalani hi nahi. Now this is the problem with most of the professionals. Now see, every doctor, हर डॉक्टर का एक सपना रहता है खुद का हॉस्पिटल शुरू करना, राइट? एवरी डॉक्टर आई हैव मेट, he or she has said that, but being a great doctor and running a hospital are completely different things,
इनफैक्ट उसको आपको सर्जरी करनी ही नहीं है, आपको कुछ और ही करना है, राइट? या फिर किसी को कुकिंग पसंद है तो वो रेस्टोरेंट शुरू करते हैं। 9 out of 10 रेस्टोरेंट्स शट डाउन इन फर्स्ट 2 years। आपको लगता है स्टैटिस्टिक्स गलत है क्योंकि इतने हम भीड़ दिखते देखते हैं हम लोग वीकेंड्स पे, हर हर कोई आउटलेट जॉइंट भरा हुआ रहता है, फिर भी ये स्टैटिस्टिक्स सर यूनिवर्सल ना, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में स्टैटिस्टिक्स सच है। 9 out of 10 रेस्टोरेंट शट डाउन विद इन 2 years ऑफ बिजनेस। उनको लगता है कि चाची आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो, आप खुद का होटल शुरू करो। वो शुरू करती है और कुछ पता नहीं रहता है कैसे, हर नो वेटर्स और वो हॉस्पिटैलिटी के रूल्स। बाय द वे, लास्ट वीक आई डिड दिस बुक, यू शुड रीड इट, सेटिंग द टेबल। अमेजिंग। इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग ऑफ चूजिंग दैट बुक टुडे, बट समहाउ आई डिसाइडेड दिस। नेक्स्ट टाइम हम वो करेंगे, सेटिंग द टेबल। कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, वो बंदा जिसने शुरू किया ये तबला नाम का उसका रेस्टोरेंट यूएस में, and he has now a long chain of restaurants across the globe. And the lesson that I've learned can be applied to any other business, not just hotel industry. Yeah. So these are the common mistakes we do. No, you're a technocrat and you think you'll become a bureaucrat. They're two different things. Technically, you can be a great doctor, a great cook, but then that doesn't mean you can run a hospital or run a restaurant. Yeah. So yeah, I think these are the points I wanted to discuss.